हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 2011 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था 1 to 11 वो पूरा कर लिया था हम लोगों ने। इस वीडियो में 2010 का हम लोग ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। 15 क्वेश्चन है, ठीक है। 10 सब्जेक्टिव होता है, वो अभी नहीं करेंगे, बाद में अगले साल का जो तैयारी कर रहे हैं उनको करवा देंगे, ठीक है। तो लेट्स गो टू द क्वेश्चन पेपर डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पेपर थोड़ा सा ऐसा ही प्रिंट मिला है, मतलब इंटरनेट से निकाले हैं तो प्रिंट ऐसा ही हमको मिला है, तो उतना क्लियर नहीं है, बट चलो ठीक है। टाइप भी करवाए होंगे हम जरूर उस टाइम 2010 में, तो लेकिन वो पेपर अभी दिख नहीं रहा है डेटा में, ठीक है। ओके, देखो पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। द मैट्रिक्स इज गिवन बाय m इक्वल्स टू 1/√2 आयोटा 1 1 आयोटा। द आइगन वैल्यूज ऑफ m आर real and positive, real and negative, purely imaginary with modulus 1, complex with modulus 1। निकाल लेते हैं 2x2 मैट्रिक्स है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट तो होगा नहीं, ठीक है। the eigenvalues are given from this equation, so it will be मैट्रिक्स m क्या है, m is basically अगर 1/√2 अंदर ले लो तो इट विल बी आयोटा बाई √2, 1/√2 1 and iota by √2. So m minus lambda I will be iota by √2 minus lambda, 1/√2, 1/√2, iota by √2 minus lambda equal to 0. So this will be iota by √2 minus lambda का होल स्क्वायर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर, है ना, इक्वल टू 0। एंड यू नो दिस फार्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी a माइनस बी। ये फार्मूला तो आपको पता ही है। सो दिस विल बी iota by √2 minus lambda plus 1/√2 and iota by √2 minus lambda minus 1/√2. So lambda is what? Lambda is 1/√2 plus iota by √2, और इधर क्या आ जाएगा minus 1/√2. So the roots are complex, purely imaginary being complex, it is complex, and their modulus is 1. So C will be the correct answer, C will be the correct answer, ठीक है, C सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो 6 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ करता था उस टाइम 300 नंबर का पेपर होता था, ठीक है। और IIT जैम का पूरा इंडिया में अकेला टीचर हम थे समझे, और कोई नहीं पढ़ाता था। आई वॉज द ओनली टीचर एट दैट टाइम। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। द वैल्यू ऑफ थीटा एट विच फर्स्ट ऑर्डर पीक इन एक्सरे डिफ्रैक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू 1 1 1 प्लेन of the simple cubic structure with the lattice constant a equals to 2.65 is approximately, बिल्कुल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या होता है फार्मूला ब्रैग्स डिफ्रैक्शन का? This is 2DHKL, where DHKL is the distance between two lattice planes having Miller indices HKL sin theta ब्रैग्स लॉ पे हर साल देखिए क्वेश्चन आ रहा है, हर साल। फर्स्ट ऑर्डर पिक बोला है तो n is 1, क्या पूछ रहा है, एंगल थीटा पूछ रहा है ना। DHKL क्या होता है, व्हाट इज DHKL? DHKL फॉर क्यूबिक क्रिस्टल इज गिवन बाय a अपॉन, so this is a upon √3. So it is twice a upon √3 sin theta equals to lambda। अब वैल्यू से आउटपुट कर लो,
ए का वैल्यू क्या दे रखा है 2.65, सो 2 इंटू 2.65 upon root 3 and sin theta equals to lambda. Lambda is 1.53. 1.53. ओके, ठीक है ना? या सो व्हाट वुड बी sin theta? Twice of 2.65 is how much? 26 दूनी 52, 5.3. Yeah. Sin theta का वैल्यू निकालो। कैलकुलेटर कहाँ है जी? हाँ ये मोबाइल लेके आए। Sin theta will be 1.53, ये वैल्यू निकालना हम लोग को। √3 गुने 1.53 अब भागा 0.5, so theta is 30 डिग्री। थीटा इज 30 डिग्री, ठीक है? थीटा विल बी 30 डिग्री सिंपली। ओके, समझ में आ रहा है? लेट्स गो टू थर्ड क्वेश्चन। ये देखिए क्या बोल रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी इज गिवन बाई, आपको ई दिया हुआ है, बी निकालना है। ई दिया हुआ है, आपको बी निकालना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ई का वैल्यू दे रखा है, ई इज ई नॉट साइन जेकब। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन किधर है? इट इज इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। और ये ध्यान रखो कि E is C mu naught H, E is C mu naught H, or you can say E is CB, where E and B are the instantaneous value of E and B. E and B are instantaneous value of electric field and magnetic field. So B is what? B is E upon C, and instantaneous value is this. So this is E naught साइन। अब डायरेक्शन कैसे निकालोगे? देखो एक चीज ध्यान रखो, n क्रॉस E इज, सब याद भी रखो, समझ लो, इट इज CB, सो B lies in direction of n क्रॉस E, B lies in direction of n क्रॉस E, so n lies in positive z direction, क्योंकि kz माइनस ओमेगा टी है, ठीक है? और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लाई कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइंग इन, say this, J डायरेक्शन। सो n क्रॉस E का डायरेक्शन क्या बनेगा बताओ? इट वुड बी K क्रॉस J, J क्रॉस A इज I, सो K क्रॉस J इज माइनस I, यानी कि द मैग्नेटिक फील्ड अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे हम लोग तो इट वुड बी लाइंग इन दिस डायरेक्शन। कौन सा आंसर मैच कर रहा है? ए। पहले क्या किया हम लोग, जो मैग्नीट्यूड है वो यहां से यूज करके निकाल लिया, इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन हम लोग यहां से निकाल रहे हैं। ये भी एक्चुअली मैक्सवेल इक्वेशन से आता है, समझ रहे हो? ये मैक्सवेल इक्वेशन से ही आता है, यहां से, ठीक है? मैक्सवेल इक्वेशन से, उसका एक अलग, उसमें नहीं घुसना चाहते हैं कैसे आ रहा है, तो यहां से आता है। ओके,
चौथा देखो क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, consider following truth table. The logic expression for f is देखो कैसे निकलेगा। आप ना पहले ट्रूथ टेबल में देखो कि कौन कौन सा इनपुट के लिए 1 है। तो 0 0 0 के लिए 1 है, तो 0 0 0 है तो इसको कर दो a बार b बार c बार, ठीक है। और 1 कहाँ है, यहां पे 1 0 0 के लिए, तो 1 0 0 के लिए लिखो a b बार c बार, a b बार c बार। फिर आपका 1 0 1 के लिए 1 है, तो 1 0 1 को लिखोगे a b बार c, a b बार c। और फिर 1 1 0 के लिए 1 है, तो 1 1 0 को लिखोगे a b c पर। समझ में आ रहा है आपको? ओके, ठीक है। सो ठीक है, चलो करते हैं। इसको क्या लिख सकते हो, आई कैन राइट इट ए बार प्लस ए बी बार सी बार, and this is a b bar c plus a b c bar, yeah. So a plus a bar is 1, so this will be b bar c bar, a b bar c and a b c bar. Okay, so this is b bar c bar, sorry, c a, ए सी को सी ए लिख दिया है, ठीक है, प्लस ए बी सी बार। अब यू कैन राइट बी बार, यू नो दिस फार्मूला, a plus bc is a plus b a plus c, right? Okay, so this can be written as c bar plus c and c bar plus a b bar c bar, right? So this can be written as b bar, c bar plus c is 1, c bar plus a b bar c bar. So I can write it as b bar c bar a b bar plus a b bar c bar, or this can be written as b bar c, a can be taken out, sorry, I can take b outside, or you see a b bar can be taken outside. b bar c bar, मेरे ख्याल से कुछ एरर हो गया है, क्योंकि ए बी बार बाहर निकालेंगे तो कोई आंसर ही नहीं है। एक बार चेक करो, कहीं कुछ गड़बड़ कर दिया है। अच्छा, यहाँ गड़बड़ हुआ है, ए बी सी बार ए बी बार सी वाली थी, ए बी सी बार है ये, ए बी सी बार, अब ठीक है, ए बी सी बार। सो आई कैन टेक ए आउटसाइड and inside you have b bar plus bc bar. अब ठीक है, so this will be b bar c, ये फार्मूला ये वाला लगा दो जो a plus bc वाला था, b bar plus b
and b bar plus c bar. So b bar plus b will be 1. So you will be left with AB, this is 1. AB bar, AC bar. B bar C, तो ये क्या आ जाएगा? This is AB bar, C bar A and C bar, सॉरी ये दोनों में है, हाँ ठीक है. So this is AB bar and C bar can be taken outside. So you have A plus B bar. D आंसर हो जाएगा. D will be the answer. ठीक है, वो एरर कर दिए थे यहाँ पर, इसलिए कोई आंसर मैच नहीं कर रहा था. ठीक है, ओके. पांचवा क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, इजी क्वेश्चन है ये. क्या बोल रहा है? मैट्रिक्स ससेप्टिबिलिटी. ये तो पैरामैटिक है. मैट्रिक्स ससेप्टिबिलिटी इन केस ऑफ पैरामैटिज्म इज C by T. तो ये तो पैरामैटिक हो गया. यहां पे मैट्रिक्स कांस्टेंट है और नेगेटिव है, तो दिस इज डायमैटिक. डायमैटिक केस में your matrix susceptibility will be negative and has a constant value. ये फेरोमैटिक होगा. फेरोमैटिक केस में you have C T minus TC, so this would be TC basically. TC T equal to TC पे infinite हो जाएगा ये. ठीक है, so this is फेरोमैटिक. उसमें ये कोर्स में हुआ करता था, अब ये कोर्स में नहीं है. ठीक है, पहले उसमें सॉलिड स्टेट फेज का सिलेबस बहुत बड़ा होता था. 2010 तक 11 तक ना बहुत बड़ा सिलेबस था. उसका सॉलिड स्टेट फेज को इन्होंने प्रून डाउन कर दिया. उसमें बहुत कुछ पढ़ाते थे हम लोग. मतलब यूजुअली बैंड थ्योरी, बिलोइन जोन, सब कुछ पढ़ाते थे. ठीक है, बड़ा सिलेबस था उस टाइम. तो कौन सा बनेगा? देखो, ए हो गया पैरामैटिक, डायमैटिक, फेरोमैटिक. ठीक है, ओके. अब ये सिलेबस में नहीं है, तो डोंट गो इनटू इट. ठीक है, छठा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है. इक्वेशन ऑफ सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन इज द यूनिट वेक्टर टू द नॉर्मल टू द सरफेस एट पॉइंट ए इज. सी दिस सरफेस बेसिकली बिलोंग्स टू, पहले तो काम करो, वेरिएबल एक साइड ले आओ. पहले तो इसको स्क्वायर करो. ये क्या हो जाएगा? जेड स्क्वायर 3/2 एक्स स्क्वायर and 3/2 y square. So this belongs to family of level surface. अब लेवल सरफेस आप पूछें क्या होता है, तो अभी तो उतना टाइम नहीं है बताने का. फैमिली ऑफ लेवल सरफेस गिवन बाय, सारा वेरिएबल एक साइड ले आइए. फैमिली ऑफ लेवल सरफेस गिवन बाय this equal to constant, where C is a arbitrary constant. You just keep on putting the value of C, you get different member of the family, and this member belongs to the family of the level surface where C is 0. When you put C equal to 0, this goes to this, right? So it belongs to a family of level surface given by this, and this is nothing but say S, right? S is function of x, y and z. So your n cap is nothing but, पहले del s निकाल लो. Gradient of s will be what? 3x I cap 3y j cap minus 2z k cap. अब वैल्यू पुट कर लो, √3/201. ये वैल्यू पुट कर लीजिए. तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? √6 I cap
y का 0 हो जाएगा एंड 2k कैप. So n cap is nothing but gradient of s upon modulus of that gradient. So it will be root 6 I cap 2k cap. 6 plus 4 10 हो जाएगा. So in a way it is 6 बटा 10 मतलब the root 10 sorry. So it would be 3 by 5 I cap and this is your n cap. This B आंसर आ जाएगा. B will be the correct answer. ठीक है? Are you getting? सातवां क्वेश्चन करिए. क्या बोल रहा है? The gas of molecule each having mass m is in thermal equilibrium at a temperature T. Let Vx, Vy, Vz are Cartesian components of velocity v of a molecule. The mean value Vx minus alpha Vy plus beta Vz square is. Mean value मतलब ये पूछ रहा है तुमसे Vx माइनस अल्फा Vy प्लस बीटा Vz ये पूछ रहा है. यानी एक तरह से क्या हो गया Vx स्क्वेयर प्लस अल्फा स्क्वेयर Vy स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर Vz स्क्वेयर माइनस 2 अल्फा Vx Vy माइनस this. So this will be nothing but Vx square Vy square this minus 2 alpha Vx Vy 2 alpha beta Vy Vz and 2 beta Vx Vz. अब ये मीन वैल्यू निकालो है कैसे? देखो mean value is given by what? Vx square Pvx dvx and Vx goes from minus to plus infinity. So what is Pvx? Pvx is probability density Pvx dvx is the probability that the molecule will have its x component of the velocity between Vx to Vx plus dvx is given by इस मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी में ये चीज पढ़ा जाता है. e to the power ये क्या है? This is the probability that a particle, a gaseous molecule, will have its x component of the velocity lying between Vx to Vx plus dvx. That is given by this. So this is your Pvx basically, and multiplied by dvx will be the probability, and this is probability density, right? तो इसको अगर यहाँ यूज करोगे तो क्या आएगा बताओ? माइनस प्लस इंफिनिटी m by 2 pi kt 1 by 2. इसको मिटा रहे, यहाँ लिख देते हैं Vx स्क्वेयर
वी एक्स स्क्वायर का निकाल लेंगे तो वी वाई स्क्वायर भी वही हो जाएगा, वी जेड स्क्वायर भी वही हो जाएगा, ठीक है। सो जगह का कमी हो गया, चलो ठीक है, लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। सो दिस इज नथिंग बट I can take m by 2 pi kt outside 1 by 2, and let's make a substitution. What kind of substitution? Let mvx square upon 2 kt is, say, what should I take? Let's take it as t, right? T. So I can say vx is 2 kt by m, sorry, 2 kt by m, and root t. So dvx will be what? dvx will be 2 kt by m 1 by 2 root t dt. So I'll put here vx square will be 2 kt by m into t, and e to the power minus t, and dvx is 2 kt by m 1 by 2 root t dt, from minus to plus infinity. In fact, what I can do is, this is even function in Vx, so this can be written as twice 0 to infinity. So let's make this twice 0 to infinity. Okay, fine. So this will be m upon 2 pi kt, or 2 kt by m कट जाएगा, you will have root pi. This 2 and this 2 will cancel out, and you have 0 to infinity root t e to the power minus t dt. And we have 2 kt by m also from here. इधर जगह नहीं है, इधर ले देते हैं, right? So let's put it here, 1 by root pi 2 kt by m, and this is what? You know this? Gamma n. So t to the power 1 by 2 can be written as t to the power 3 by 2 minus 1. So it's gamma 3 by 2, or it is 2 kt by m, and gamma 3 by 2 is gamma 1 by 2, gamma 1 by 2, and gamma 1 by 2 is root pi, so this will cancel out, 2 will cancel out. So the mean of Vx square is kt by 2, kt by m. So this is what? This is your kt by m. Similarly, this will also be kt by m. This will be kt by m. And what are these? These will be 0. Why? Because if I evaluate these, what do I get? See, the probability current density, sorry, Vx, this will be basically minus infinity plus infinity, Vx Vy, and Pvx Pvy. Pvx is what? m by 2 pi kt, in fact double integral, दो है ना, e to the power minus, and Pvy is m by 2 pi kt half e to the power minus mvy square by 2 kt.
dvx dvy, right? So this integral will simply split into this. I can take m by 2 pi kt outside, दो है तो 1 by root 2 1 by root 2 1 हो जाएगा, and this will be nothing but minus a plus infinity vx mvx square by 2 kt dvx and minus a plus infinity vy right, and this is odd function, this is odd function, and limit is from minus something to plus something. This is also odd function vy, because you know this exponential term is even function, vx is odd function, so odd function into even function is odd function. Similarly, this is odd function, this is even function, odd function into even function is odd function. This is 0 and this will also be 0. So these are all, they will all collapse, 0 0 0, right? Okay. So the mean of Vx minus is simply kt by m 1 plus alpha square beta square, right? So this is A will be the correct answer. A will be the correct answer. ठीक है, A आपका सही आंसर आ जाएगा. ऑलराइट, ठीक है. 8वां क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन क्या आ रहा है? A circular platform is rotating with a uniform angular speed omega counterclockwise about an axis passing through its center and perpendicular to the plane as shown in figure. A person of mass m walks radially inward with a uniform speed v on the platform. The magnitude and direction of Coriolis force with respect to direction along which the person walks is. ये देखिए, क्या बोल रहा है? Person of mass walks radially inward with uniform speed v on the platform. The magnitude and direction of Coriolis force is. Magnitude and direction of Coriolis forces. देखो ये ओमेगा हो गया. So omega is in upward direction. V is in this direction. Omega is in upward direction. तो ओमेगा क्रॉस V कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? माइनस 2m omega cross V. So omega cross V will be in this direction and minus sign it will be inward. तो मतलब वो अगर इधर जा रहा है तो राइट, मतलब V के omega cross V is towards left, but you have minus sign, so it will be Coriolis force will be towards right. ठीक है, so it will be towards right and the magnitude wise this will be 2m omega v, because omega and v the angle is 90 degrees, so omega cross v will be omega v, so it is 2 omega v 2m omega v towards right, omega cross v is towards left, it's right. Okay, all right. ओके, 9th क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है. A quarter wave plate is placed in between polarizer and photo detector. When the optic axis of quarter wave plate is kept initially parallel to the path axis, ठीक है,
parallel to the path axis of a polarizer and perpendicular direction of light propagation, the intensity of light passing through quarter wave plate is measured to be I naught. ठीक है, पूरा का पूरा wave pass कर रहा है. If the quarter wave plate is now rotated 45 degree about the axis parallel to a light propagation, what would be the intensity? देखिए, ये आपका क्वार्टर वेव प्लेट है. ठीक, अब एक चीज समझो आप, when you have प्लेन पोलराइज लाइट फॉलिंग ऑन क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट, ये तो प्लेन पोलराइज हो जाएगा ना यहां से, बिकॉज शुरू में तो पोलराइजर रखा हुआ है, तो जो पास एक्सिस है उसके पैरेलल सारा फील्ड वाइब्रेशन होगा. सो व्हेनेवर यू हैव प्लेन पोलराइज लाइट फॉलिंग ऑन क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट, व्हाट विल हैपन? इफ द डायरेक्शन ऑफ फील्ड वाइब्रेशन makes some angle with the principal section of quarter wave plate or half wave plate, and suppose that angle is different from 0, 90, 180 and so, then in that case the plane polarized light will split into E wave and O wave. Plane polarized light will undergo double refraction because quarter wave plate and half wave plate, they are usually doubly refracting crystal. So plane polarized light falling on a quarter wave plate with field vibration making an angle different from 0, 90, 270, 180, then in that case the plane polarized light will undergo a double refraction and will split into two plane polarized light. One will be having field vibration parallel to the principal section and other will be having field vibration perpendicular to principal section. One is called extraordinary wave, other is called ordinary wave. So those E wave and O wave will happily pass through the crystal and will develop a phase difference of pi by 2 when they come out of the quarter wave plate. After developing that phase difference, they will again superimpose on each other and will form, if it is quarter wave plate, it will form elliptically polarized or circularly polarized depending on the angle which the field makes with the principal section 45 or not. But whatever the wave splits, it undergoes double refraction, pass through the crystal and then superimpose. So there is no change in the intensity as such. Intensity is not lost anywhere in quarter wave plate or half wave plate. It is lost here. If it is I, it is I naught by 2. If it is I naught, it is I naught by 2 here. But here in quarter wave plate and also in half wave plate, there is no loss of energy unless question gives you that. वहां पे तो डबल रिफ्रैक्शन होता है, स्प्लिट होता है अंदर में और आग बाहर निकल के सुपर इम्पोज हो जाता है, तो एनर्जी लॉसेस तो कहीं है नहीं. सो एनर्जी लॉसेस ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है ना कुछ हो रहा है. हाँ, क्वेश्चन में दे दिया कि हाँ 10% एनर्जी एब्जॉर्ब करता है क्रिस्टल का प्रॉपर्टी, तो अलग मैटर है. बट आइडियली यू डोंट हैव एनी एब्जॉर्प्शन एनर्जी, नो लॉस ऑफ एनर्जी एज सच. ठीक है. सो वॉट एवर इंटेंसिटी यू हैव ओवर हियर, द सेम इंटेंसिटी विल बी हियर. राइट, वॉट एवर इंटेंसिटी यू हैव ओवर हियर, सेम इंटेंसिटी विल बी देयर. और क्या लिखा है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू क्वार्टर वेव प्लेट इज मेजर्ड. अच्छा, यहाँ पे आई नॉट है तो यहाँ भी आई नॉट ही रहेगा, यहाँ भी आई नॉट ही रहेगा. व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू क्वार्टर वेव प्लेट, मतलब आई नॉट है तो मतलब आई नॉट पहले रहा होगा तभी ना पास एक्सिस और प्रिंसिपल सेक्शन पैरेलल होने पर आई नॉट निकल रहा है. ठीक है, तो घुमा दोगे तब भी आई नॉट ही रहेगा. ये कुछ कोई एनर्जी खाता नहीं है क्वार्टर वेव प्लेट, जितना फॉल करता है उतना ही बाहर भी निकल जाता है. ठीक है, there is no loss of energy in quarter wave plate, and same is true for half wave plate. Same is true for half wave plate. ये देखिए 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है. पार्टिकल ऑफ, बड़ा करते हैं, a particle of mass A moving with velocity v naught I cap plus j cap collides elastically with another particle of mass 2m which is initially at rest. Which are following is correct? Direction along which the center of mass moves before collision is this. The speed of particle m before collision in the center of mass is root 2 v naught. After collision, the speed of particle with mass 2m in the center of mass is root 2 by 3 v naught. The speed of particle of mass 2m before collision in the center of mass is root 2 v naught. अच्छा, okay. सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? आपको मास m का वेलोसिटी दे रखा है बिफोर कोलिजन और 2m जो है रेस्ट पे है. सो VCM वुड बी व्हाट?
VCM would be m into V, 2m into 0, you don't have it at rest. So this will be 1 by 3 V naught I plus j cap, right? So center of mass is I cap plus j cap by 3. So this is not correct. This is not correct. माइनस आई कैप प्लस जे कैप के डायरेक्शन में नहीं है, आई कैप प्लस जे कैप के डायरेक्शन में. सो दिस इज इनकरेक्ट. द स्पीड ऑफ पार्टिकल ऑफ मास बिफोर कोलिजन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज, सेंटर ऑफ मास में क्या वेलोसिटी होगा, v1c will be v1 minus vcm. So this will be v1 is v naught I cap plus j cap minus v naught by 3 I cap plus j cap. So this is 2 v naught by 3 I cap plus j cap. It will be 2 root 2 by 3 v naught. ये भी गलत है. The speed of particle of mass 2m before collision in the center of mass is root 2 v naught. v2c का बात बोल रहे हैं ना. v2c is v2 minus vcm. So v2 is 0, so it is vcm only. vcm का मैग्नीट्यूड क्या है, रूट 2 v naught by 3. ये भी गलत है, तो c सही होगा. After collision, speed of particle with mass 2m in center of mass frame is root 2 v naught by 3. After collision, the speed of particle before collision क्या है, minus vcm. So the magnitude of v2c is what, before collision का बात करो, is v naught root 2 by 3. And you should know the property that the speed of particle in center of mass frame remains same after collision. जो before collision होगा वही after collision होगा. अगर ये center of mass है, ये आपका v है, so v goes like this. So this is particle number 1, this is particle number 2. So whatever is velocity before collision, its direction will change of course, but the magnitude wise it will be same. If it is v2c and after collision it is v2c dash, then this can be easily proved that v1c का magnitude is same as v1c dash and v2c dash का magnitude will be same as v2c dash. This, okay. So this is correct. Before collision भी speed जो होगा वही speed after collision, direction बदल जाएगा बस velocity का, ठीक है, direction बस बदल जाएगा. This can be proved. This is a very interesting derivation. Okay. 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 11वां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है. A trapped air bubble of volume V naught is released from depth h measured from water surface in large water tank. The volume of bubble grows to 2 V naught as it reaches just below the surface. The temperature of water and the pressure above the surface of water remains constant throughout the process. If the density of water is 1000 kg per meter cube and acceleration due to gravity is 10 meter per second square, then depth h is देखिए देखो क्या बोल रहा है. ये है, पहले क्या था, बबल V नॉट था, यहां आके बबल क्या हो गया, 2 V नॉट. ठीक, ओके. Assuming temperature to be constant, what is the pressure when the bubble was here?
pressure here to go. Of course, there is equilibrium. Pressure inside and pressure outside will be same. Pressure inside and pressure outside here will be same. So here the pressure is P ATM. What is pressure here? P ATM plus rho GH. So assuming temperature to be constant, we will apply PV equal to nRT. T is constant. So P into V will be constant at this point and at this point. So here pressure is P ATM plus rho GH into V naught. And here the pressure will be, at the top the pressure will be, this is H. This is P ATM into 2 V naught. So V naught will cancel out. So what do you have? Rho GH is P ATM. 2 P ATM minus P ATM is P ATM, right? And P ATM is atmospheric pressure, which is 10 to the power 5, right? Yeah, pressure above surface is 10 to the power 5. So rho is 1000 kg per meter cube. 1000 kg per meter cube. G is 10, H is H. So H is what? 10 meter. B. H is 10 meter. Simply. Okay. We are using Boyle's law. We have used Boyle's law. Temperature is constant. So PV at the bottom and PV at the top will be equal. ये देखो 12वां क्वेश्चन, बस एंड पे पहुंच गया। ये 15 क्वेश्चन बड़ा इजी है, मतलब एक यूजुअली पहले क्या था कि 10-10 क्वेश्चन का स्लॉट में बनाते थे। जैसे मैं तो घर में स्टूडियो है ना, तो 10-10 क्वेश्चन का स्लॉट में बनाते थे। 10 क्वेश्चन बनाया, फिर था कुछ पढ़े, कुछ पानी वानी पिए। अब 15 क्वेश्चन का एक बार में हम बना देते हैं, ठीक है। अब थकान भी नहीं है, कम है, मतलब ऐसे 60 क्वेश्चन करवाना है। साइकोलॉजिकल थोड़ा रहता है ना। 12 नंबर देखो क्वेश्चन क्या हो रहा है। पार्टिकुलर मास इज कन्फाइंड इन अ 2-dimensional इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल ऑफसाइड है 2-dimensional इनफाइनाइट स्क्वायर, 2-dimensional बॉक्स है बेसिकली। द आइगन एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन एज दिस। ओके, द स्टेट इज, देखिए समझिए बात को। फॉर 2-dimensional box, the energy will be given as what? ENX ENY, और स्क्वायर वेल है, मतलब लेंथ ब्रेथ सेम है। सो इट विल बी h स्क्वायर पाई स्क्वायर 2ma स्क्वायर this, and this is equal to 25 pi square h square ma square. Ma square will cancel out. This will cancel out. So what do you have? nx square ny square 2 उधर जाएगा तो 50। अब आप बताइए nx ny का कितना ट्रिपलेट है, तो कितना, what are the allowed value of nx ny? nx ny has to be positive integer। तो एक तो वैल्यू जो हमको समझ में आ रहा है वो 5 है, और कुछ, तो ये एक आइगन स्टेट हो गया, ये एक आइगन स्टेट हो गया। आइगन स्टेट क्या है यहाँ पे? साई nx ny इज 2/a साइन each nx ny pair gives you a eigenstate. So one eigenstate is this। एक और जो हमको समझ में आ रहा 17 49 150 और एक 7 1, और तो कोई हमको दिख नहीं रहा है कि दो पॉजिटिव इंटीजर जिसका स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर इज 50, और कोई दिख नहीं रहा। सो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, you have 3 eigenstate having same energy value. So this given state with energy this is 3-fold generate। 3-fold degenerate मतलब 3 eigenstate का same energy value रहेगा, ठीक है। ओके, गुड। 13 क्वेश्चन देखो, अब कितना 13 14 15 ये है, कर लेंगे इसको हम लोग आराम से।
फिजिक्स में देखिए न्यूमेरिकल में कोई एफर्ट नहीं लगता ज़्यादा। थ्योरी पढ़ाना बहुत एफर्ट वाला काम है, समझ रहे? थ्योरी पढ़ाना, इसलिए थ्योरी से लोग बचते हैं, वो लोग ना शॉर्टकट बना के निकल जाएंगे, कुछ ट्रिक्स पढ़ा देंगे, ये बहुत आप मतलब दे आर नॉट गुड टू यू दोज हु आर टीचिंग सुपरफिशियली, सिर्फ हाँ ये ट्रिक है ये ऐसे, वो दे आर स्पॉइलिंग योर कैरियर इन फिजिक्स, है ना? डिटेल में पढ़िए कोई चीज़, मतलब फिजिक्स का एसेंस मिला है, फिजिक्स का ब्यूटी आप रियलाइज कर पाएंगे, ठीक है? ओके, फॉर ए वेव इन मीडियम द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड वेव वेक्टर के आर रिलेटेड बाय दिस, द प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी इज, ऐसे तो ग्रुप वेलोसिटी इनटू फेज वेलोसिटी सी इसका होता है, फिर भी निकाल लेते हैं। ओमेगा क्या है, मतलब डी ब्रोगली वेव में हम लोग पढ़ते हैं ऐसे, ये आ गया ना। सो फेज वेलोसिटी विल बी ओमेगा बाई के this, and group velocity will be d omega by dk, it is twice of and twice c square k, this will all cancel out, all right. So if I multiply Vp into Vg, so this will be on k into c square k, so this will cancel out, this will cancel out, so it is c square, d is the correct answer, d जो है सही आंसर आ जाएगा, क्लियर? ओके, ये देखो 14th क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, 3 identical non-interacting particles each are spin half and mass m are moving one dimension of infinite potential, well particle in one dimension box है, 0 to a potential 0 is a free particle, and beyond that it is infinity, highly repulsive. The energy of the lowest energy state of the system is, 3 पार्टिकल है non-interacting particle with spin half, so that means Pauli exclusion principle will apply, Pauli exclusion principle will apply. The energy associated with nth level is n square pi square h cross square upon 2ma square, right? So the first energy level is h cross square pi square upon 2ma square. The second energy level is 4h cross square pi square upon 2ma square, right? Okay, so you have 3 particle और लोएस्ट एनर्जी बोल रहा है, तो नीचे से स्टेट ऑक्यूपाई करना पड़ेगा, तो 2 पार्टिकल यहाँ चला जाएगा, 1 पार्टिकल यहाँ चला जाएगा, तभी लोएस्ट एनर्जी होगा ना। सो टोटल एनर्जी विल बी व्हाट, 1 पार्टिकल की एनर्जी है, दूसरे पार्टिकल की एनर्जी है, तीसरे पार्टिकल की एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी विल बी 2h का स्क्वायर पाई स्क्वायर, लोएस्ट एनर्जी बोल रहा है तो नीचे से फिल करते हुए जाएंगे तभी लोएस्ट एनर्जी आएगा, और ये 4, so it is 6/2, मतलब 3h का स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई ma स्क्वायर, so this will be the answer, C will be the correct answer, C जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ये देखिए 15वां क्वेश्चन, फेमस है क्वेश्चन।
assume that z equal to 0 is the plane, z equal to 0 plane is the interface between two linear homogeneous dielectric. एक डाइलेक्ट्रिक इधर है 2 और एक डाइलेक्ट्रिक इधर है, ठीक है। सेकेंड डाइलेक्ट्रिक का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है और फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है। The electric field in the region z greater than 0 is E1 is 3I cap minus 5J cap 4K cap, ठीक है। If there is no free charge on the interface, the electric field in the region z less than 0, this is z less than 0, this is z more than 0. So I can break this electric field into two. En, which is 4K cap, and tangential to interface, which is 3I cap minus 5J cap. And I will apply two boundary conditions. This is E1, so I call it E1 tau, and this is E2n. So you have the boundary condition that E2 tau is E1 tau. E2 tau is E1 tau, ठीक है। यानी E2 tau जो होगा वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो E2 tau same as E1 tau, but E1n is not E2n. In fact, D2n is D1n. In fact, you have this boundary condition. D2n minus D1n is sigma f, and the question gives you there is no free charge at the interface. So D2n is what? Epsilon naught epsilon r2 E2n, and this is equal to D1n, which is epsilon naught epsilon r1 E1n. So E1n is epsilon r2 by epsilon r1 E1n. नहीं, गलत। sorry. So E1n is epsilon r2 E2n by epsilon r1. So E2n is 4 and epsilon r2 is 5. So 5 into 4, epsilon r1 is 4. So this is 5. So E1n is 5. So if I write in terms of vector, E1n vector is 5K. So E1, sorry, ये E1 है, E2n, सॉरी, अरे क्या लिखना है, ये क्या लिया था, E1 लिया था ना, सॉरी, ये सेकेंड वाला को E2 ले लो यार, इसको E2 ले लो और इसको E1 ले लो, ठीक है। सो समझ गया, मतलब उल्टा कर दिया हम, ठीक है, इसको E2 कर दिया, ठीक है। So E1 is E1 tau E1n. So this is E1 tau is same as E2 tau, and E1n is what? 5K. E2n was 4K, 5K. So 3I minus 5J plus 5K, ये आ जाएगा। मतलब थोड़ा सफल हो गया है, समझा ना? E1 is E2, E2 is E1, my proposition, ठीक है। So I think that's all for today. क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने, ठीक ही क्वेश्चन होता था पहले भी, देखिए पहले ज़माने में भी एग्ज़ाम का ठीक ही क्वेश्चन होता था। तो ये आ गया 2010 का, है ना। कल सुबह उठेंगे 2009 करेंगे, फिर 2008 करेंगे, फिर 7 करेंगे, 6 करेंगे, 5 करेंगे, 5 साल का करेंगे, ठीक है। कल 2 साल या 3 साल का करेंगे, अब परसों जो रिमेनिंग ईयर्स का कर देंगे, हो जाएगा ख़त्म। परसों हम लोग का ये पूरा प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा। 2005 से लेकर 2023 तक का पूरा सोल्यूशन हम लोग निपटा देंगे, ठीक है, कंप्लीट सोल्यूशन। और जो कुछ डाउट्स वगैरह आ रखा है वो हम कल बैठते हैं, वो एक्चुअली वीडियो मोबाइल पे वीडियो देख के बड़ा रेफर करना मुश्किल होता है, क्या पूछे हो, ठीक है। तो सारा पेपर लेके बैठेंगे 1 घंटा 2 घंटा और सारा रिप्लाई करेंगे आप लोग का, ठीक है, चिंता मत कीजिए। जो जो क्वेश्चन सब पूछे हैं सबका हम रिप्लाई मारेंगे कल, ठीक है। पेपर लेके बैठेंगे, पेपर्स देखेंगे क्या पूछे हो तुम लोग, ठीक है। तो ऐसे मोबाइल पे कितना वीडियो में जाएंगे, रिवर्स फॉरवर्ड करते रहेंगे, मतलब बहुत मुश्किल होता है। लैपटॉप पे बैठेंगे तो उसको फिर करेंगे सारा, ठीक है। सो सॉरी फॉर डिले इन द रिप्लाई, बट आई विल डू इट,
राइट। कल नहीं तो परसों जरूर हम कर देंगे, ठीक है, सारा क्वेश्चन। ओके, सो टिल देन थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में हम लोग 2009 का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।